गाइस ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੀ ਗੋਰਿੰਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੈਫ ਆਰਿਫ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗਾ ਅੱਜ ਮੀ ਗੋਰਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੋਮੈਟੋ ਸੌਸ, oyster sauce, chili sauce, veggie kale. You can use also spinach, mustard leaf also can use. Garlic, one green chili and some tomato. This guy's ketchup is called soya sauce. It's special for mee goreng. It's very dark color for you can buy any convenience store in Malaysia. So guys, we take 2 teaspoon all sauces and mix into a bowl. ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। गाइस दिस इस चिकन ब्रेस्ट यूज़ किया है और इसको लम्बा काटा है। तो गाइस पहले हम ऑयल लेंगे, गार्लिक को स्मैश करेंगे और काटेंगे। इसके लिए आप वॉक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वॉक में अच्छे से बनता है। तो पहले हमने डाला है गार्लिक। So guys, this is red chili paste. You can make it at home. You can take some dry chili and soak in the water, then boil it. After boil, you can blend and make a smooth paste like this. This is nice. You can use for many dishes. So guys, हमने जो ये सेव किए हैं मी गोरिंग, तो ये नूडल की तरह ही होते हैं, इसको जेलो नूडल बोलते हैं। तो इसको हमने हटाएंगे और नूडल यूज़ करेंगे। तो मेक द गार्लिक ब्राउन, Then we put chili paste. तो इसके बाद गार्लिक, आफ्टर गार्लिक we use paste 1 tablespoon. 1 tablespoon for 2 people. For 2 portion we use 1 tablespoon. So you can see, and you can use as much as you want according to your spiciness. Then we add the chicken first, make it saute nicely cooked, half cooked. Yes guys, looks so nice. So this is a veggie stem we use for. After 2 minutes cook the chicken, use the stem. Make it little soft or not a so cooked. Use the sauce that we may mix together before. Just use the sauce. So nice. Then add the noodles, yellow noodles into the wok. Fried it well. You can see the color so nice. Traditional Malaysian recipe. You can follow me for my YouTube. Check it more. After we use the tomato, mustard leaf, mix it. We use it after because the last, because we don't want the so soggy taste. Make little crispy, looks so nice.
and colorful. Yeah. Put some chicken Then season with chicken stock. stock. With some sauce. Some salt according to your taste. Guys, you can see it's looking so delicious. So guys, this is the trick of chef. After cook the everything, you use 2 egg. You can side the noodle, put the egg. Okay. Then add white pepper. And mix it. After mix it well, you can see it looks so nice, so beautiful.